In the last lecture, what did we do? We did the space, lattice and unit cell, and with that we did the 7 crystal systems. Now 7 crystal systems, as you can see in the figure over here, let's take a recap. There are 7 crystal systems depending upon the parameters of the unit cell. So we did 2 parameters of the unit cell. The first one was the sides A, B and C, and the second was the angles alpha, beta and gamma. Depending upon that, we did 7 crystal systems. In the first, that is cubic, which we said is the most symmetrical crystal system. A is equal to B is equal to C. You can see over here, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degrees. Then the second system, that is tetragonal. In tetragonal, the 2 sides are equal. A is equal to B, not equal to C. So only 2 sides are equal over here, and all the 3 angles are equal. Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. The third one is monoclinic. Go to orthorhombic first. The third one, that is orthorhombic, in which all the 3 sides are unequal. That is, A is not equal to B, is not equal to C, but all the angles are equal. Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degrees. Right? Then the next one is monoclinic. In monoclinic also, all 3 sides are unequal. A is not equal to B, is not equal to C. 2 angles are equal. Alpha is equal to beta is equal to 90 degree. Alpha is equal to gamma is equal to 90 degree. But beta, that is not equal to 90 degree. Then the next one you can see is hexagonal. In hexagonal also, it's like a hexagon. 2 sides are equal. A is equal to B, but the height, that is C, is different. So 2 sides equal. A is equal to B, but not equal to C. 2 angles equal. Alpha is equal to beta is equal to 90 degree, but gamma over here, that is 120 degree. Then the 6th one is robohedral. In robohedral, all 3 sides are equal. A is equal to B is equal to C. All 3 angles are also equal, but the angles, they are not equal to 90 degree. And the last one, triclinic. In triclinic, all the 3 sides are unequal and all the 3 angles are unequal. So this figure gives us the entire visualization of the 7 crystal systems. Okay, so this is what we had done in the last lecture. Types of unit cell. Well, we say that there are basically 2 types of unit cells. The first one, that is primitive unit cell. The first one is primitive unit cell. In primitive unit cell, all the lattice points are at all the 8 corners, right? So it is also known as cornered unit cell. What are we saying? If this is what we are taking over here, let's say this is a crystal. In primitive unit cell, all the lattice points are at the corners, or all the constituent particles are present at the corners. So there are 8 corners. So we are saying that the lattice points, they are present at the 8 corners. In all these systems, you have to keep in mind that all the lattice points or all the constituent particles, they are touching each other. Okay? We assume that all the constituent particles are touching each other. The second type of unit cell, it is known as
the centered unit cell, in centered unit cell, in addition to all the lattice points present at the corners, there are lattice points also present in the center of the cell. So, locating the positions and according to the positions, the centered unit cell that is further divided into the following kinds. The first one, it is known as face centered unit cell. Face centered unit cell. Now, face centered unit cell means that over here the constituent particles are going to be present at all the corners plus one at the center of each face. Right? So, if you're taking a cube, one at the center of each face. So we have these present at all the corners, plus there are, if you're sitting in a room watching this lecture, please have a look at that room. Over there you will have the ceiling, which is one face, the floor, which is the other face, so that makes two faces, and then you have four walls. So four walls कितने faces बना रही है? Four faces. In total 6 faces. So यहाँ पे अगर हम लोग 2 डायमेंशनल में इसकी पिक्चराइजेशन देख रहे हैं तो 2 डायमेंशनल में सिर्फ 4 फेसेस हमें नजर आते हैं. तो यहाँ पे क्यूब को आप अपने रूम को विजुलाइज करेंगे जहाँ पे एक रूफ है, एक सीलिंग है, एक रूफ है, एक फ्लोर है, एंड देयर आर 4 वॉल्स. सो वी हैव 6 constituent particles which are present at each of the face. 6 constituent particles which are present at each of the face. Then second one, second is body centered. In body centered, the constituent particles are present at all the 8 corners plus one at the center of the body. So we have present at all the corners, present at all the corners, and plus one is present at the center of the body. Right? So if this is a room, we say that one constituent particle is present at the center of the body. Right? That is what body centered is. Then the third one is end centered. End centered. End centered means that the constituent particles are present at all the corners plus one at each of the opposite faces. End means where the crystal is ending, right? So it is present at the end of the crystal at opposite 2 faces. So if we draw a picture of this, what will we get? I am drawing it over here. So you can see they are present at all the 8 corners and plus at the center of any 2 opposite faces. Is it clear? So this is end centered. Then in addition to this, there is another one which is known as edge centered. Edge centered means what? That you know what the edge is, where the 2 faces they are joining. So this is the edge where the 2 faces they are going to join. इसको हम edge बुलाते हैं. तो उस edge के ऊपर corners के ऊपर present रहेगा और उस edge के ऊपर present रहेगा.
अब दोबारा से अगर आप जिस रूम में बैठे हो उसको देखेंगे तो आप देखिए जहां जहां पे भी वो ज्वाइन कर रहा है फेस 12 एजेस आपको नजर आएंगे। तो एक क्यूब में या एक किसी भी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल में 12 एजेस होते हैं। सो इन टोटल अगर हम लोग देखें, सो आई एम ड्राइंग इट ओवर हियर, वी हैव 8 कॉर्नर्स, these are the 8 corners, and plus at all the the edges. So you have edges like this. These are the edges. So this is known as edge center. Clear? So these are the type of unit cells, the primitive unit cells and the centered unit cells. We have primitive unit cell of one type, in where all the constituent particles are present at all the 8 corners, and we have centered unit cell of 3 types. The first one is face centered, where the constituent particles are present at all the 8 corners plus at the center of each face. Second, body centered, all the 8 corners plus 1 in the center of the body, and end centered at all the 8 corners plus at 2 opposite faces. And then there is another one, edge centered, where at all the corners and the center of each edge. Right? So this is what our types of unit cell is. Now when we are talking of crystal systems, it is not always, it does not happen कि हमेशा एक ही टाइप का या जो क्रिस्टल हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही टाइप का हो, which is simple. Right? कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक क्रिस्टल लैटिस सिर्फ सिंपल हो। सिंपल का मतलब क्या हमने यहाँ पे पढ़ा है, प्रिमिटिव। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो अलग अलग तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब कि क्रिस्टल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में जैसे हम क्यूबिक लेते हैं, जो फर्स्ट हमने किया, तो क्यूबिक सिंपल तरह का भी प्रेजेंट है, राइट, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स. A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. उसी तरह से हमारे पास क्यूबिक में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी प्रेजेंट होता है और क्यूबिक में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी प्रेजेंट होता है. डिपेंडिंग अपॉन दिस देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम ब्रेवियस था, जिन्होंने 14 क्रिस्टल सिस्टम्स को डिफाइन किया. 14 क्रिस्टल सिस्टम्स. तो देखते हैं 14 क्रिस्टल सिस्टम्स कौन कौन से हैं. सो एज वी जस्ट सेड, हम लोग डिफाइन करेंगे 14 क्रिस्टल सिस्टम्स, और ये जो 14 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं साइंटिस्ट के नेम पे इनको हम ब्रेवियस लैटिसेस भी बुलाते हैं. Bravais lattices. Now Bravais lattices में कौन से क्रिस्टल सिस्टम में फर्दर कौन से टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं उनको हम पढ़ेंगे. तो उसके लिए हम फिर से लिखते हैं CTOMHRE. ठीक है, where C is cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, hexagonal, rhombohedral and trigonal. आपको ये याद रखना है कि इन पूरे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में जो सिंपल यूनिट सेल है या सिंपल क्रिस्टल है या प्रिमिटिव क्रिस्टल है या प्रिमिटिव यूनिट सेल है, वो इन सब 7 में प्रेजेंट रहता है. सो द मोस्ट कॉमन इज प्रिमिटिव.
फेस सेंटर्ड, क्योंकि ये क्यूबिक है तो इसको हम लोग FCC टाइप ऑफ क्रिस्टल भी बुलाते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इन अ सिमिलर मैनर इसके पास है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड which is also known as BCC। टेट्रागोनल के पास सिर्फ दो प्रेजेंट रहते हैं, one is primitive and the other one is body centered, face centered is missing। ऑर्थोनोमिक के पास चार तरह के प्रेजेंट है, चौथा कौन सा हमने किया था हमने अभी, the fourth one we did was edge centered की end centered, we did end centered, ठीक है। So orthonomic has all four, we have orthonomic, we have end centered, face centered and body centered, right? So orthonomic के पास है चार, फिर उसके बाद आ गया मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के पास भी दो ही प्रेजेंट है, one is primitive and the other one that is end centered, और जो नीचे के तीनों है उसके पास सिर्फ एक एक प्रेजेंट है which is primitive। So टोटल करते हैं, टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स कितने हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 and 14। So there are 14 crystal systems जिनको हम क्या बुला रहे हैं, ब्रेवियस लैटिसेस, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम लोग क्रिस्टल सिस्टम्स करें तो हम इन सब में जो, जैसे हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ा और हमने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ा, तो उन सब में हम लोग कैरेक्टराइज कर रहे हैं एक यूनिट सेल को, पर एक क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम कोई भी एक यूनिट सेल लेते हैं तो वो सराउंडेड रहेगा ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, दाएं और बाएं। So all 6 sides it is surrounded by other unit cells. Depending upon that, अगर हम primitive unit cell लें या हम body centered लें या हम end centered लें, तो जो हम lattice points ले रहे हैं उन lattice point पे जो constituent particles हैं वो एक unit cell में completely present नहीं होते, ओके, वो एक सेल में कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होते, वो अपने आप को शेयर करते हैं विद अदर यूनिट सेल्स। तो अगर वो अपने आप को शेयर कर रहे हैं तो कुछ एक छोटा सा पार्ट उस यूनिट सेल में बच जाता है और बाकी का पार्ट वो बाकी यूनिट सेल्स के साथ शेयर करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इन एक्चुअल द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट रहेंगे एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में, वो डिपेंड करता है कि यूनिट सेल कौन सी तरह का है। सो लेट्स गो बैक टू व्हिच वन, वी आर गोइंग बैक टू द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। लेट्स गो बैक टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। सो हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, ठीक है। सो हम फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल पे चलते हैं, प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में हमने क्या बोला कि द यूनिट सेल, इन द यूनिट सेल constituent particle is present at all the corners, ठीक है, सारे corners में constituent particle present रहता है। और हम बोलते हैं कि अगर एक यूनिट सेल है तो उसका कॉर्नर एक और यूनिट सेल्स के साथ शेयर कर रहा है अपने आप को, ठीक है, उसका जो कॉर्नर है वो शेयर कर रहा है एक और यूनिट सेल से। तो इन एक्चुअल क्या होगा कि अगर
प्रेजेंट है, आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे। अगर 8 कॉर्नर्स के साथ वो शेयर कर रहा है तो इन एक्चुअल एक यूनिट सेल के पास कितना शेयर रह जाएगा? सिर्फ 1/8। इट इज शोन टू यू इन द फिगर ओवर हियर, ओनली 1/8 इज लेफ्ट विद ईच ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, और इन टोटल हमारे पास कितने प्रेजेंट है? इन टोटल हमारे पास 8 प्रेजेंट है। So into 8, which means अगर हम प्रिमिटिव ले रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक यूनिट सेल में कितने हैं? ओनली 1। क्लियर? ओके, देन सेकंड लेट्स गो टू फेस सेंटर। फेस सेंटर, इन केस ऑफ फेस सेंटर हमारे पास कॉर्नर में सारे प्रेजेंट हैं, तो कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन क्या हो गई? 1/8 into 8। जो फेजेस प्रेजेंट है, फेजेस, एक फेज 2 यूनिट सेल के साथ अपने आप को शेयर करता है। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक फेज पे प्रेजेंट होगा तो वो दोनों यूनिट सेल के साथ शेयर करेगा, तो कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाती है? हाफ, राइट? So we have half, और हमने अभी देखा in total there are 6 phases into 6, that is equal to 3. Okay, so in total phase centered में कितने आ जाएंगे? There are 4, right? You can see over here in the figure कि phase centered में एक जो constituent particle फेस पे प्रेजेंट है वो अपने आप को शेयर कर रहा है between two different unit cells. Clear? Then third is body center. बॉडी सेंटर में क्या रहेगा हमारे पास? अगेन कॉर्नर्स में प्रेजेंट है 1/8 into 8, that is equal to 1। ठीक है, और जो बॉडी की सेंटर में प्रेजेंट है वो किसी के साथ अपने आप को शेयर नहीं करेगा। ओके, सो वो कंप्लीटली प्रेजेंट रहता है। सो वी हैव +1 जो कि सेंटर ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है। इन टोटल कितने हो गए? 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो प्रिमिटिव में 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, फेस सेंटर में there are 4 constituent particles and body center में there are 2 constituent particles। अब फेस सेंटर में अगर हमारे पास नंबर ऑफ constituent particles 2 ही है, जैसे कि हम एंड सेंटर में कर रहे हैं, एंड सेंटर में although they are present at 2 opposite phases, contribution उसकी हाफ ही रहेगी, बट वहां पे हमारे पास क्या आ गया? 6 की जगह 2 आ जाएगा, तो 1/2 into 2 will become equal to 1. So end center, if we are taking number of constituent particles, they are going to be equal to 2. Have you understood? So let's say corners में present है 1/8 into 8, that is equal to 1, and end centers में present है so we have end center पे we have 2 particles। उसी तरह से edge center भी देख लेते हैं। edge center में हमारे पास corners में present है, so that will become equal to 1। now edge center में the constituent particle present at the edge वो अपने आप को 4 और यूनिट सेल्स के साथ शेयर करता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, there are 12 edges into 12, so this becomes equal to 3। in total number of constituent particles they are going to be equal to 4।
Clear? So let's just recap. मारते हैं फटाफट. Corner में what is the contribution to one unit cell? 1/8. ठीक है? Face center में 1/2. Body center में 1. End center में 1/2 and edge center में 1/4. Right? So इस वाले टॉपिक में से हमको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं which we will discuss in the next class. Today we will do the entire theory and in the next class we are going to discuss certain questions which comes from this section. Okay? Then let's go on to the next topic, that is nearest neighbor distance. Now when we are looking at a unit cell, तो unit cell का जो first characteristic हमने करा वो हमने parameters करा था. उसके बाद second characteristic number of constituent particles, the third characteristic that is going to be nearest neighbor distance. हम अपनी study को धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं उसको कम करते जा रहे हैं. जब हमने chapter शुरू करा था solid, तो solids को हमने classify करा था into two. One was crystalline and the other one was amorphous. फिर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के क्रिस्टलाइन को हमने फर्दर क्लासिफाई करा इनटू मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक क्रिस्टल्स. ठीक है? फिर उसके बाद हमने फर्दर उसको पैरामीटर्स के बेसिस पे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में क्लासिफाई करा. अब हम लोग सिर्फ अपनी स्टडी को आप कह सकते हो कि कंसंट्रेट करके रखेंगे ऑन क्यूबिक क्रिस्टल्स. Right? So we are going to study the cubic crystals only in detail. Let's go on to cubic crystals. What are the 3 types of cubic crystals? There are 3 types of cubic crystals. We just studied. सबसे पहले simple cubic. Second is face-centered cubic and third is body-centered cubic. उन सब में हमको nearest neighbor distance पढ़ना है और हम already assume कर चुके हैं कि जब भी कोई lattice point पे एक constituent particle present रहता है तो वो दूसरे के साथ अपने आप को touch करता है. ठीक है? So हम लोग first करते हैं simple cubic. Now simple cubic is the primitive one. So we have this is a simple cubic. Do not forget कि cubic है. So in this case all the edge lengths they are going to be same. और हम क्या बोल रहे हैं ये इसके साथ टच कर रहा है. तो अगर ये इसके साथ टच कर रहा है तो लेट्स से हम इसको शो कर देते हैं. राइट? वी आर जस्ट शोइंग दिस वन. इसकी अगर रिप्रेजेंटेशन क्योंकि सबको टच करके दिखाना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, सो हम लोग सिर्फ इस वाले पॉइंट को टच करके दिखा रहे हैं. So basically this is the representation of this line जहां पे ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं. ठीक है? अब nearest neighbor distance क्या होगा? Obviously this is the nearest neighbor distance. तो अगर आप यहाँ पे edge length ले रहे हैं a, all the edge lengths in cubic are going to be same, right? So nearest neighbor distance यहाँ पे क्या हो जाएगा? That will be a. ओके और रेडियस. अच्छा इसमें एक और चीज हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो जितने भी ये स्पेयर्स हम ले रहे हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स ले रहे हैं स्पेयर्स दे आर ऑल ऑफ द सेम साइज. सबकी साइज सेम है. ठीक है? सो डी अगर ए आ गया, अगर ये ए आ रहा है तो इसका जो हम हाफ लेंगे वो रेडियस आ जाएगा.
ठीक है, सो रेडियस ऑफ द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक दैट इज गोइंग टू बी a/2। ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, क्यों? क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं हमें 1 या 2 मार्क्स के इन योर CBSE एंड आल्सो इन योर कॉम्पिटिटिव्स, आपके बोर्ड्स में भी और कॉम्पिटिटिव्स में भी, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास आ गया फेस सेंटर। ओके, अब फेस सेंटर में constituent particles are present at all the corners and at all the faces. So let's show the representation now. ठीक है, all the corners तो हम सिर्फ ऊपर वाला फेस शो कर रहे हैं, यहाँ पे वन इज प्रेजेंट होगा हियर, राइट। तो अगर हम इसको डायगोनल को ज्वाइन कर दें, अगेन ये सब टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये इसको टच कर रहा है और ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग अगर इसको शो करना चाहें ऑन वन लाइन, सो ये जो ये वाली आपको डायगोनल नजर आ रही है दैट इज दिस लाइन, ठीक है। सो रेडियस इसका आ गया r, इसका रेडियस आ गया 2r और इसका रेडियस आ गया r। पर हमको क्या कैलकुलेट करना है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कौन सा होगा? दिस। This is the nearest neighbor distance. So let's इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं और इसको C लिख देते हैं, ठीक है। Now according to Pythagoras theorem in triangle ABC AC square is equal to AB square plus BC square, ठीक है। All edge lengths are same, so AB square आ गया, A square plus A square ये आ जाएगा 2A square, AC आ गया under root of 2 into A। Now AC is this entire thing, हमको इसका हाफ कैलकुलेट करना है जो कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा, तो D क्या आ जाएगा? D is going to be equal to half of AC, AC divided by 2, so under root of 2 into A upon 2, 2 को हम लिख सकते हैं as under root of 2 into under root of 2, so ये और ये कैंसिल, so डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ जा रहा है? A by under root of 2 और रेडियस half of distance, so that will become equal to A by 2 under root 2. So FCC में the nearest neighbor distance is A by under root 2. इसके न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं अभी नेक्स्ट सेक्शन में, so by that time ये फॉर्मूले should be on your tips, ठीक है। फिर उसके बाद R हमारा क्या आ जाएगा? A by 2 under root 2. Have you understood? Then the third type of cubic crystal which is present, उसको हम क्या बुलाते हैं? Body centered cubic lattice।
body center. Body center में one is present at the center of the body. So we have this is at the center of the body. Again, I am telling you that all constituent particles are touching each other. ठीक है, this is very very important. So over here again हमने इसको यहाँ से यहाँ टच कर दिया है. We've already made that diagonal वहाँ पे. So यहाँ पे भी हम इसको और इसको diagonal को join कर देते हैं. ठीक है. Now we are going to consider triangle. This is A, B, C and D. Now please consider triangle ADC, right? Triangle ADC जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे hypotenuse Pythagoras theorem के accordingly AD square, because nearest neighbor distance is going to be this now. AD square is equal to CD square plus AC square. CD square हो गया A का स्क्वायर और AC स्क्वायर ऑलरेडी हमने यहाँ कैलकुलेट करा था, which is 2A square. So A square plus 2A square ये बन गया हमारा 3A square. So what is AD now? Under root of 3 into A. ठीक है. अब D क्या आ जाएगा? I'm writing it over here. D will be equal to what? Half of AD. So it becomes under root of 3 by 2 into A. ठीक है. और R क्या आ जाएगा? Again half of D under root of 3 by 4 into A. So this is for body center. Clear हो गया? Let's summarize in a small table. Okay. So next, I am summarizing what we have done. उसको एक टेबल में कर रहे हैं हम. हमारे पास तीन तरह के क्रिस्टल्स हैं. सिंपल क्यूबिक, FCC फेस सेंटर क्यूबिक, BCC body centered cubic. So इस पे what is going to be the nearest neighbor distance? In case of simple it is A. In case of FCC it is A by under root of 2, and in case of body center it is, these formulae are very very important, under root of 3 by 2 into A. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस के बाद रेडियस. रेडियस इज हाफ ऑफ डिस्टेंस. सो यहाँ पे रेडियस आ जाएगा A by 2, A by 2 under root 2 under root of 3 by 4 into A. Right? So ये आपने टेबल जो है वो मेमोराइज करना है. Then next we come to coordination number. इस सेक्शन में से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, coordination number of various crystal lattices. First of all, let's understand कि coordination number क्या है. Coordination number क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को कितने और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टच कर रहे हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बुलाते हैं. ठीक है. जैसे कि हमने रेडियस रेशियो में किया था, एक सेक्शन हमने किया था रेडियस रेशियो, उसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर किया था कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कैटायन एंड द एनायन, अगर सेंटर में कोई हमारा कैटायन है तो उस कैटायन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एनायंस उसके
सर्कमफ्रेंस में फिट हो सकते हैं और उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बुलाते हैं। अब जब हमने टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स करे, सिंपल करा है, एफसीसी करा है और बीसीसी करा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंपल क्यूबिक ले रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर द फिगर्स कि सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर इज गोइंग टू बी 6। ठीक है, उसी तरह से अगर हम एफसीसी ले रहे हैं, इसको हम डिटेल में भी पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स में करेंगे। सो अगर हम एफसीसी ले रहे हैं, the coordination number in FCC that is going to be 12। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ले रहे हैं, the third one which we did, बॉडी सेंटर्ड में the coordination number that is going to be 8। ठीक है, so these are the three characteristics which we have done today of crystal systems. The next one which we are going to do is density of a crystal lattice, unit dimensions. Now, when we are talking of a crystal is characterized by its unit dimensions. We have already done the edge length A, okay? जो A होगा उसकी edge length से हमको पता चलता है कि एक क्रिस्टल का साइज क्या है। Similarly, एक डेंसिटी से हमें पता चलेगा कि क्रिस्टल जो है वो कितना हॉलो है या कितना हेवी है। सो डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल जो है दैट इज वी जनरली स्टडी बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज, और हम क्रिस्टलोग्राफी में इसको पढ़ते हैं, बट मैथमेटिकली डेंसिटी को हम किस तरह से डिराइव करेंगे उसे देखिए। डेंसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्योंकि यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये मास होगा यूनिट सेल का और ये वॉल्यूम होगी यूनिट सेल की। ठीक है, यूनिट सेल ओवर हियर इज अ क्यूब, राइट? सो मास ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा? मास ऑफ द यूनिट सेल विल डिपेंड अपॉन कि उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, it can be molecules, it can be ions, okay, constituent particles, or into mass of each atom. Right? Let's say number of atoms present को हम ले लेते हैं Z, okay, into mass of each atom को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Mass of one mole of atom divided by Avogadro's number। 11th में हमने किया है कि हम एक एटम के मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 मोल ऑफ एटम्स का मास होता है। ओके, तो अगर आपको 1 मोल में कितने एटम्स हुए? 6.02 to 10 raised to power 23। So if you need to calculate the mass of one atom, that will be equal to the mass of 1 mole divided by number of particles in 1 mole। ठीक है, अब what is volume? Because it is a cube, so volume of cube regular हो लेते हैं, which is equal to a cube। So now let's put the values over here। Density क्या आ जाएगी? Z into m upon a cube into n naught। ठीक है, अब what
is Z over here? Z we have just discussed the number of constituent particles. जैसे primitive में या simple में Z is going to be equal to 1. Face centered में Z is going to be equal to 4 and body centered में that is going to be equal to 2. Right? So यहाँ पे आप Z according to the kind of crystal that is given उसके accordingly करेंगे. M is the molar mass or the atomic mass which is given to you in the question, and N naught is the Avogadro's number. A cube edge length. Generally आप देखते हो कि edge length या तो picometers में या angstrongs में या हमें nanometers में दे रखी है, उसको हमें convert करना है into centimeters. Why? Depending upon the unit of course. अगर डेंसिटी का यूनिट सीजीएस में दिया है ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आप एज लेंथ को कन्वर्ट करोगे इनटू सेंटीमीटर क्यूब, और अगर डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब दिया है तो आप एज लेंथ को कन्वर्ट करोगे इन मीटर्स. राइट? सो टुडे वी विल डू ओनली टिल हियर. टुमारो वी विल प्रैक्टिस around 6 to 7 questions in the lecture, and we will also do the next topic which is packing efficiency.